Okay, so hello everyone. Today we are going to see classification of various battery technologies. मतलब जब से बैटरीज का जन्म हुआ है उससे लेके अब तक कौन सी वेरियस बैटरी टेक्नोलॉजीज हमने आज तक स्टडी किए वो हम अभी देखने वाले। अभी जो मेन टॉपिक है वो बैटरी टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है। तो बैटरी टेक्नोलॉजी मतलब जैसे पहले के ज़माने में बड़ी बड़ी बैटरीज रहती थी विच वेर नॉट पोर्टेबल, सो टू हैंडल देम एंड टू यूज़ देम इन हाउस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। सो जैसे जैसे प्रगति बढ़ते गई, मतलब जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में बदल होते गए। और बैटरी टेक्नोलॉजी मतलब ऑल अबाउट द इन्वेंशंस, मतलब बैटरीज कैसे आगे बढ़ी, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उनके ट्रेड सीक्रेट्स, फार्मूला, टेस्ट रिजल्ट्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग और यूजिंग बैटरीज। ओके, so batteries, according to the various battery technologies, they are classified as chemical based classification, structure based classification, application based classification, and last one is the performance based classification. Now we will deeply study in chemical based classification. So what is chemical based classification? This method of classification is based on the chemistry of the materials used in the battery. मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली इस टाइप पे डिस्क्राइब किया गया है कि उसमें कौन सी केमिकल्स, कौन सी केमिस्ट्री यूज़ की जाती है। तो जो मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं लाइक लीड एसिड बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज, निकल मेटल हाइब्रिड सोडियम बैटरीज, जिंक एयर बैटरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी जो हमने बैटरीज देखी, ईच बैटरी हैज़ इट्स ओन यूनिक प्रॉपर्टी एंड ईच बैटरी हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन विच मेक्स देम सुटेबल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। अभी जो केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन है वो हम आगे डीप डीप में देखेंगे। तो नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब पहले के ज़माने में जो बैटरीज जब इन्वेंट हुई थी तो वो पोर्टेबल नहीं थी। सो इन स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो बैटरी का फिजिकल स्टेट चेंज होता गया। सो इस टाइप के क्लासिफिकेशन में जो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैटरी है उसका स्टडी किया जाता है। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बैटरी इंक्लूड सिलेंड्रिकल, प्रेमिस्टिक, कॉइन, थिन फिल्म, फ्लेक्सिबल एंड प्रिंटेड बैटरीज। अभी जो स्ट्रक्चर है बैटरी का वो डिटरमाइन करते हैं इसका फॉर्म फैक्टर इन विच टर्न डिटरमाइंस हाउ इट कैन बी यूज इन डिफरेंट डिवाइसेस और एप्लीकेशन। मतलब हम जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा उसकी प्रॉपर्टीज़। सो स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन में हमारी सिलेंड्रिकल बैटरीज आती है, प्रेमेस्टिक बैटरीज आती है, कॉइन बैटरीज आती है, थिन फिल्म बैटरीज आती है, फ्लेक्सिबल बैटरीज आती है और प्रिंटेड। आता आपण स्टडी करणार आहोत ॲप्लिकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन. दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटेंडेड ॲप्लिकेशन ऑफ द बॅटरी. The most common types of battery applications include portable, automotive, stationary, and aerospace batteries. Each of these applications has its own unique requirements for power, energy density, safety, and durability, which can influence the choice of battery chemistry and structure. हे जे काही ॲप्लिकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन आहे हे त्यांच्या इंटेंडेड ॲप्लिकेशनवरती त्याच्यावरती बेस्ड आहे. आणि त्याचे मोस्ट कॉमन टाईप्स आहे बॅटरी हे ॲप्लिकेशनचे, ते आहे पोर्टेबल, ऑटोमोटिव्ह, स्टेशनरी अँड एरोस्पेस बॅटरीज. आणि ही जी काही ॲप्लिकेशन आहे त्यांची युनिक रिक्वायरमेंट्स पॉवरसाठी आहे एनर्जी डेन्सिटी इज नथिंग बट द अमाऊंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन सिस्टीम स्पेस पर युनिट व्हॉल्यूम. आणि त्याची सेफ्टी अँड ड्युरॅबिलिटी म्हणजे द ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिमेन serviceable, which can influence the choice of battery chemistry and structure. Application based classification, that are portable batteries, automotive batteries, stationary batteries, and aerospace batteries. Performance based classification. This method of classification is based on performance characteristics of battery. The most common types of battery performance metrics include energy density, power density, cycle life, fast charging capability, and self discharging rate.
हे जे काही परफॉर्मन्स बेस्ड क्लासिफिकेशन आहे ते बॅटरीजच्या कॅरेक्टरिस्टिकवरती डिपेंड करतं. त्यातले मोस्ट कॉमन टाईप आहे बॅटरी परफॉर्मन्सचे ते की एनर्जी डेन्सिटी, पॉवर डेन्सिटी, लाईफ सायकल, फास्ट चार्जिंग कॅपॅबिलिटी अँड सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट. हे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते बॅटरीची सुटेबिलिटी डिटरमाइन करतात इन डिफरंट ॲप्लिकेशन्स सच एज हाय परफॉर्मन्स consumer electronics, electric vehicles, renewable energy storage and backup power system. Performance based classification are high energy density batteries, high power batteries, long life cycle batteries, fast charging batteries and low self discharge batteries. And further is continued. आता आपण स्टडी करणार आहोत ॲप्लिकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन. दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटेंडेड ॲप्लिकेशन ऑफ द बॅटरी. The most common types of battery applications include portable, automotive, stationary and aerospace batteries. Each of these applications has its own unique requirements for power, energy density, safety and durability, which can influence the choice of battery chemistry and structure. हे जे काही ॲप्लिकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन आहे हे त्यांच्या इंटेंडेड ॲप्लिकेशनवरती त्याच्यावरती बेस्ड आहे आणि त्याचे मोस्ट कॉमन टाईप्स आहे बॅटरी ॲप्लिकेशनचे ते आहे पोर्टेबल, ऑटोमोटिव्ह, स्टेशनरी अँड एरोस्पेस बॅटरीज. आणि हे जे काही ॲप्लिकेशन आहे त्यांचे युनिक रिक्वायरमेंट्स पॉवरसाठी आहे एनर्जी डेन्सिटी. एनर्जी डेन्सिटी इज नथिंग बट द अमाऊंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन सिस्टीम स्पेस पर युनिट व्हॉल्यूम. आणि त्याची सेफ्टी अँड ड्युरेबिलिटी. ड्युरेबिलिटी म्हणजे द ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिमेन सर्व्हिसेबल which can influence the choice of battery chemistry and structure. Application based classification that are portable batteries, automotive batteries, stationary batteries and aerospace batteries. Performance based classification. This method of classification is based on performance characteristics of battery. The most common types of battery performance metrics include energy density, power density, cycle life, fast charging capability and self discharging rate. हे जे काही परफॉर्मन्स बेस्ड क्लासिफिकेशन आहे ते बॅटरीजच्या कॅरेक्टरिस्टिकवरती डिपेंड करतं. त्यातले मोस्ट कॉमन टाईप आहे बॅटरी परफॉर्मन्सचे ते की एनर्जी डेन्सिटी, पॉवर डेन्सिटी, लाईफ सायकल, फास्ट चार्जिंग कॅपॅबिलिटी अँड सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट. हे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते बॅटरीची सुटेबिलिटी डिटरमाइन करतात इन डिफरंट ॲप्लिकेशन्स सच एज हाय परफॉर्मन्स consumer electronics, electric vehicles, renewable energy storage and backup power system. Performance based classification are high energy density batteries, high power batteries, long life cycle batteries, fast charging batteries and low self discharge batteries. And further is continued. Chemical based classification of batteries. It means what different types of chemical combinations are used in a battery to maintain the potential difference in it. They are broadly classified into two types, primary and secondary. So now, what are primary batteries? These batteries in which redox reaction takes place only in one direction and the reactants are used up, rendering these cells dead. Thus, they cannot be recharged and reused. Its examples are dry cell and alkaline batteries. In alkaline batteries, MnO2 and zinc are used as electrodes, and in dry cells they are known as dry because of electrolyte material is generally a paste and not a liquid. Secondary batteries. These batteries are rechargeable batteries. They can be recharged by passing current in the opposite direction. It's possible due to reversible reaction taking place in them. Now we will look at the lead acid batteries. These are one of the oldest types of batteries. These are secondary types of batteries, means they can be recharged. They were first invented by French physicist Gaston Plante in 1859. Lead acid batteries use lead and lead oxide as electrodes and concentrated sulfuric acid as electrolyte material. They have low energy density, high power to weight ratio. Due to their ability of providing surge current,
They are used in starter motors. Besides this, they are also used in backup cell phone towers, high availability emergency power systems, etc. Hello everyone. Now discuss about lithium ion batteries. Nowadays, this is the most widely used rechargeable battery technology. These lithium ion batteries are found in laptops, electrical vehicles, and many other devices. They have a high energy density, longer lifespan, and are relatively lightweight. Now, discuss about nickel cadmium batteries. This technology have been around for a long time, but this being passed out due to environmental concerns related to cadmium. They are still used in some cordless power tools and other applications. Hello everyone, we are going to discuss sodium ion batteries. Sodium ion batteries are type of rechargeable battery that use sodium ion as charge carrier. Sodium ion battery is relatively young compared to other battery type. Sodium ion batteries are cheaper and safer than traditional lithium ion batteries. It is also charge faster and deliver more energy. It has low cost. Its efficiency is greater than 90%. Energy density is moderate. Sodium ion batteries are stable in higher temperature. Now zinc air batteries. These are metal air batteries. They are composed of zinc electrode, a porous air electrode and potassium hydroxide electrode. It has high energy density, low cost. Its shelf life is limited. They are commonly used in hearing aids and other small devices. Now we are going to learn advantages of battery technology. The first advantage of battery technology is portability. Batteries are more portable and can be used in various devices from small gadgets to large electric vehicles. Second advantage of battery technology is rechargeability. Most batteries are rechargeable, which means they can be used multiple times, saving resources and reducing waste. The third advantage is low maintenance. Batteries require very little maintenance compared to other energy storage technologies like generators or fuel cells. The disadvantages of battery technologies are as follows. Limited lifespan. Most batteries have limited lifespan with a finite numbers of charge and discharge cycle before they degrade and need to be replaced. The second disadvantage is safety concerns. Some battery technologies such as lithium ion batteries can be prone to thermal railways or explosion of they are not properly designed, handled or stored. Third, the cost. Some battery technologies, especially newer ones, can be expensive to produce and may not be cost effective for certain application. Fourth disadvantage is environmental impact. Some battery technologies require the extraction and processing of rare or toxic materials, which can have environmental impact if not managed. So these are the disadvantage of battery technologies. Thank you.